Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss about types of research. Owing to the time that taking the consideration of the time factor, we don't have much time, so we are going to focus on two types of research today. That is your descriptive and analytical one. See, there are two ways of describing this. Either I can go on and tell you the theoretical part of that, and the second way is that okay, we can understand it through an example. The example that I pose in front of you is a situational basis. That means we are going to examine a situation, and from there we are going to understand what is meant by a descriptive research and what is meant by an analytical research. I hope I am clear on my part over here. So proceeding further without any delay, when we talk about descriptive research, we need to understand one thing very important, that generally descriptive research is used by people who are into the field of literature. That means a person who is doing PhD in literature, maybe has done PhD in literature, researching into that field, that person is more into the descriptive way of research rather than the analytical one. Okay, giving that example which I promised right now, we'll just come into it. Just imagine a situation, that means India before 1947, that means before we achieved our independence. At that time, you can say that okay, it's 10 p.m. at the night, and there is a man walking from a distance. See, at that time, if I say that prior to independence India we are talking of, we can just say okay, रात के अगर 10 बजे हैं, तो that simply means all people around, they are already off to their beds, because there was not much electricity etc over there. So the thing is again that everybody is inside, and as for the social life and the nightlife, obviously there were no clubs and pubs like today. That simply means सुनसान सड़क है, there is nobody out, there is only one man walking. Now the description of the man. See, that man is 5 feet 5 inches, 5.5 फुट का आदमी है लगभग, and he is bald. गंजा है, चोटी है, जनेऊ है, and that person is wearing a white dhoti, and that person is walking in his own thoughts कि worried है बहुत ज़्यादा, he is tensed regarding something and he is just walking. See what happens now in from the opposite direction. एक तो you need to understand another thing over here very important, that अगर हम बात कर रहे हैं before independence, so it simply means that रोड्स नहीं है, तो कच्ची सड़क पर जा रहा है ऑब्वियसली, और अगल बगल में पूरा सन्नाटा है, सुनसान है. खेती बाड़ी होती थी उस वक्त पर, इंडिया आज भी होती है बट उस वक्त पर ज़्यादा होती थी. तो यू कैन से दैट ओके, एग्रीकल्चरल फील्ड्स इधर उधर दोनों साइड में, सामने पीछे, एंड थोड़े बहुत पेड़ हैं, मतलब बिल्कुल सुनसान सन्नाटा. एंड देयर इज़ नोबडी, ही इज़ वॉकिंग. ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इज अनदर पर्सन कमिंग, एंड दैट पर्सन इज लाइक ओके वेयरिंग अ शॉल, कि उसने मुंह ढका हुआ है अपना, एंड एवरीथिंग लाइक कवर्ड, एंड वो 6-6.5 फुट का है, बल्कि. तो एंड ही इज ऑल्सो कैरिंग अ स्टिक, डंडा लाठी अपने साथ में लेकर के आ रहा है. नाउ व्हाट हैपन्स, एज सून एज दैट पर्सन रीचेस हिम, देखो दिस फेलो ऑफ आवर्स 5 feet 5 inches वाला, दिस पर्सन हु इज बाल्ड, चोटी है, जनेऊ है, विच आई गेव यू एन एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, दैट पर्सन डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग. वो अपनी थ्योरी, अपनी थॉट्स में, उसको मालूम नहीं है सामने, मतलब ध्यान भी नहीं दे रहा है वो. नहीं तो अगर हम वैसे देखें सिचुएशन को देख करके, ऑब्वियस सी बात है, आई एम गोइंग समवेयर और यू आर गोइंग समवेयर, सामने से कोई इस तरह से मुंह ढक करके आता है तो वी गेट थोड़ा सा कि सतर्क हो जाते हैं, बट नहीं, दैट पर्सन इज वरिड अपने थॉट्स में. तो सामने से द पर्सन हु इज कमिंग, एज सून एज ही अप्रोचेज दिस मैन, वो जो लंबा वाला आदमी है, ही पिक्स अप ए स्टिक और जोर से उसके सर पे मार देता है. दैट पर्सन फेल्स डाउन अनकॉन्शियस. नाउ व्हाट हैपन्स टू दैट मैन इज अ लेटर पार्ट ऑफ द थिंग, बट प्लीज फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन, on the description, so that you can understand what I am trying to explain you. Matlab, what is meant by descriptive research and analytical research. Our point is that I am just giving you an explanation with this thing in frame. Okay, see now what happens. This person feels unconscious. अब नेक्स्ट डे, दैट मीन्स अगेन रात भर वो वहाँ पर पे पड़ा हुआ है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया प्रायर टू इंडिपेंडेंस. नोबडी कम्स अराउंड, नाइट लाइफ तो कुछ है ही नहीं. सुबह को पता चलता है लोगों को, जब भीड़ होती है, दे फाइंड दैट ओके देयर इज अ पर्सन लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड अनकॉन्शियस. बट बहुत देर हो चुकी है, ब्लीडिंग इतनी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली यू नो दैट. और उस वक्त पे अगर अगेन मेडिसिन की अगर हम बात करें या हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज डेड नाउ. नाउ व्हाट हैपन्स, देयर इज अ वुमन हु इज क्राइंग नियर बाय, मतलब भागते हुए आती है, बहुत रोती है, ऑब्वियसली वाइफ ऑफ दैट मैन, डिसीज्ड जो है उसकी वाइफ है. बट अगेन द थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट लेडी इज क्राइंग, शी इज ग्रीफ स्ट्रकन है, सैड है दैट हस्बैंड इज डेड नाउ. बट ज़्यादा उसको चिंता क्या है कि घर में 5 बेटियां हैं एंड उनकी शादी कैसे होगी, वो भी उसके माइंड में एक थॉट लिंगर कर रहा है. ओके, वील स्टॉप ओवर हेयर. ऑल्दो इसका और भी आगे का एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव, बट ओविंग टू टाइम वील हैव टू स्टॉप ओवर हेयर. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ आई राइट दिस सिचुएशन एज इट इज, इट बिकम्स अ नॉवल ऑब्वियसली, कि एक स्टोरी जैसा है, इट हैज़ बिकम अ नॉवल. इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. आई हैव डिस्क्राइब्ड अ पर्सन इन ऑलमोस्ट एवरी मैनर आई कुड, कि 5 फुट 5 इंच है, गंजा है, चोटी है,
जनेऊ पहना हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स कि ठीक है कैसे चीज़ें हो रही हैं. So we have just got into the life of a person right now, but in a fashion that we have described it in a immensely, you can say, okay, trying to beautify that thing. Okay, that is what is known as your descriptive research, if I do such kind of thing. Now again, I pointed out to that thing initially also. Descriptive research, it is carried on generally by people who are into the field of literature. हिंदी साहित्य हो सकता है, संस्कृत हो सकती है, या किसी भी तरह का साहित्य. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ लिटरेचर. सो दीज पीपल जनरली रिलाई अपॉन योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. Although descriptive research does not mean that okay, descriptive research won't be applied on other fields also, history, etc., evolution of something, that is also described. But again, the focus is whenever we talk of literature, novel writing, descriptive research is used over there. This is known as a descriptive research, that I have just explained, described one particular situation, although I can go on in explaining other things also, but one particular expression. This is descriptive. Now important thing is, we'll take from the same example what is meant by analytical research. See, I'm sorry to say literate, a person who is into the field of literature, that person has done this descriptive research. A person in the field of law or maybe social sciences is now going to analyze the situation, and hence it will become an analytical research. For instance, that person is not going to report in a descriptive manner, that person is only going to analyze and write. For example, by the same example, if I say that I am portraying a person who is bald, who has a choti, and also he is wearing a janehu, plus he is wearing a dhoti at that time prior to independence. So one thing that can be brought out from here analytically is that this person is a Hindu, right? So that means now we talk of that Hindu culture if we become that analytical scientist. So this becomes now analytical part of the research. Up till now we had just described the situation, we had just told that okay, a man is coming, lathi maar di, wo bichara mar gaya, etc., etc. That is a descriptive research. But now when you start analyzing the situations in depth, कि ठीक है गंजा है, 5.5 फुट का है, चोटी है, जनेऊ धारण करा हुआ है, धोती पहनी हुई है, तो यू कैन कोरिलेटेड विद हिंदुइज्म कि ठीक है हिंदू है और हम हिंदू सिस्टम की बात करने वाले हैं आगे चल करके. ऑल्दो आई डिड नॉट टेल यू द इंटायर थिंग आगे का भी, बिकॉज ये आपका सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो अगेन टाइम का शॉर्टेज, दैट इज द रीजन वाई. Okay, then coming to the second part, see, another thing that was explained was wife is crying, but more on the point that they have got 5 daughters who have to be married. कि 5 लड़कियां हैं जिनकी शादी करनी है, वो ज़्यादा दुखदायी है उसके लिए. ये भी दुखदायी है कि हस्बैंड मर गया, लेकिन ज़्यादा दुखदायी वो है कि 5 बेटियां हैं. तो अगेन द हिंदू एंड द हिंदू सिस्टम एंड एनालिटिकल साइंटिस्ट डज दिस, कि आप एनालिटिकल रिसर्च अगर कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को कि एक वो हिंदू है और हिंदू सिस्टम में किस तरह से बेटियां बोझ बन गई हैं किसी के ऊपर में, एंड अगेन एम्पावरमेंट इज रिक्वायर्ड इन दैट एरा. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मॉडर्न एरा टुडेज, बिकॉज गर्ल्स टुडे आर लाइक ओके, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, बट येस ऑफ दैट एरा इफ वी डिस्कस, यहाँ पर पे वी एनालाइज दैट वहाँ पर हिंदू सिस्टम में मैरिज वॉज वेरी एसेंशियल पार्ट. एंड देन अगेन इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 5 गर्ल्स, हैड देयर बीन अ बॉय, wife would have been more grief stricken on the point that the husband is dead. But the wife is grief stricken on the point husband dead, but more grief stricken on the point that she has got 5 daughters who have to be married. दहेज कहाँ से आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, खर्चा कौन करेगा. So you can easily understand दहेज प्रथा एटसेट्रा पर बेस्ड, बट इसको एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं. Descriptive research means merely fact stating and merely just telling that okay fine, I am a correspondent, I am a reporter, journalist, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को, किसी इंसिडेंट को, एंड बिल्कुल डिस्क्राइब करके अच्छे से, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. When we talk of the other part, that is analytical research. So उस description में if I am analyzing things out, I am investigating into it and finding things out, that is known as your analytical research. See, I already said initially also we don't have much time owing to that condition. That is all I can say right now. But the condition again is there are other things to it also. There are so many types of them. But still, I hope this was like okay, easily understood, and you can easily understand what I was trying to say. Thank you.